Hey guys, welcome back to my channel, and I'm here to solve the new question, that is 795 of numbers of subarrays with the bounded maximum. And from now I will be consistently uh, means मैं per day try करूंगा कि videos डालूंगा, and first I will be covering all the examples, means जो बहुत important है, arrays and then linked list and all, recursion and all. So first, the question is the numbers of a subarray with the bounded maximum. So given an integer array nums and the two integer left and right, uh, return the number of contiguous non-empty subarray such that the value of maximum array element in that subarray is in the range left and right. The test cases are generated so that the answer will fit in the 32-bit integer. Okay, means nums. Then this is example of 2143 left, 2 right, 3. The explanation is given. Okay, yeah. So let's go on the open board and I will be explaining that question. So first we will take the one example, that is 2 1 4 3. This is the example, means this is the first test case in the given example. So इस प्रॉब्लम एक्चुअली दिया गया है कि हमको मैक्सिमम सब अरेज निकालना है बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट अरेज, मींस जो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मींस जो फर्स्ट इंडेक्स का एरे होगा और द लास्ट इंडेक्स का एरे होगा, उनके बीच में वो सब एरेज, मैक्सिमम सब एरेज एग्जिस्ट करने चाहिए. सो हियर we can say the left array is 2 and the right array is 3. सो ऐसे सब एरेज जो इन दोनों के बीच में आने चाहिए, द मैक्सिमम सब एरे शुड एग्जिस्ट इन बिटवीन दिस रेंज, बिटवीन 2 एंड 3. मींस एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमको रेंज ही बता रहा, उस रेंज के बीच में होने चाहिए. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? So what I think, if first we can do iteration. हाँ, we can do the iteration, means सब सबके सब एरे अलग अलग निकालेंगे. जैसे if we are finding out first sub array, 2 1. Okay, 2 1. Yeah, here 2 is maximum element. Here the 2 is a maximum element and it lies between 2 and 3. हमको ऐसे सब अरेज चाहिए जो 2 एंड 3 के रेंज में होने चाहिए. इफ द 2 एंड रेंज के ऊपर जा रहा, मीन्स इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट, इफ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दिखा रहा, दिस इज अ 4 एक्चुअली. सो इफ वी आर टेकिंग अ 4, then this is not the example of a sub array, because it doesn't come in the range of a 2 and 3, because it exists the 3 by 1. So we will try कि वो सब एरेज, मैक्सिमम सब एरेज 2 और 3 के बीच में आए. So what would be my first brute force solution for this? कि हम सबके अलग अलग सब एरेज निकालेंगे. जैसे if I am finding out the first sub array कि 2 and 1,
देन 1 and 4, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सब अरेज है एंड नहीं है. 2 4, the single element can be a subarray. Also 1, also 4, also 4 and 3. तो हम देखेंगे यहाँ पे सब एरेस कौन से है. ये सब एरे बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट इज अ 2. ये सब एरे नहीं है बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट इज 4. ये भी सब एरे नहीं है बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट इज 4. ये सब एरेज है बिकॉज इट इज 2 एंड it exists in between the 3 and the 2. So 1, not, because it is less than 2, and it doesn't exist in between 2 and 3, and 4 also not. This also not. Means we can see there are three sub-arrays, but while finding this, we knows that time complexity is big O of n square. So it's not the best or the better time complexity. So we will go to a better solution. So next we will open the next page. Just from the first we will be explaining, and अभी इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम स्लाइडिंग अप्रोच लगाएंगे, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, कि वहां से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी होंगी, एंड हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसमें कितने कंडीशंस लगते हैं कि हम वाइड यूज करेंगे. एंड इट्स वेरी सिंपल, ये मीडियम लेवल का दिया है. मेरे को नहीं लगता इट इज ऑफ अ मीडियम लेवल बिकॉज इट्स वेरी सिंपल गाइस, एंड वी आर डूइंग बाय यूजिंग ओनली if else statements and if else and while statement. So just we are using here sliding. स्लाइडिंग विंडो अप्रोच. सो इन स्लाइडिंग विंडोज में ये जो एग्जांपल था 2 1 4 3, इसमें इटरेशन भी करेंगे. सो स्टेप वन में क्या करेंगे. वी विल कंसिडर I equals to 0, J equals to 0, M equals to 0, count equals to 0. सेकेंड स्टेप, कि हम मेन कंडीशन देंगे कि द अरे ऑफ J should, if this is greater than, if the array is J, means we can say it is greater than a right, then the condition will false. एंड यहाँ पे सब एरेज नहीं होगा बिकॉज वो राइट साइड में मीन्स मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा, नॉट द मैक्सिमम एलिमेंट, because we are taking the example of a 2 and 3. So if the number is exceeding by 3, it is of a right side, then the condition will false and that will not come in the sub arrays. So we will just go to the step 3. हाँ, स्टेप 3 में कैसा होगा कि हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि that element should not be smaller than 2, or the should not be smaller than the left side, and should not be greater than the bigger side, not the bigger side, than the right side. So the condition will be, okay, this condition says
the element should be greater than the left side element and smaller right side. This is a main condition. So let's go on the code and let's explain कि वहां पे हमने क्या किया है. So okay. हाँ, तो भी यहाँ पे भी हमने सिंपल वही किया है कि फर्स्ट हमने वो स्टेप वन हमने कंडीशन दी है कि आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो एंड काउंट इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू जीरो. ये मीन्स इन द फर्स्ट इफ वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल 2 4 2 1 3, सो यहाँ पे भी इटरेट करांगा आई एंड जे. ये धीरे 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 इटरेट करेंगे जे from the first index to the last index also. In the first condition, we will keep by just should be smaller than the arrays. यहाँ पे arrays we can say we मैंने भी यहाँ पे गड़बड़ की थी कि मैं arrays लिख रहा था बट कंडीशन में क्या था nums लिखा था and we can say कि nums is equals to arrays in this problem. हाँ, फर्स्ट कि वो चेक करेगा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट चेक करेंगे एलिमेंट कि वो रेंज में है कि नहीं. मीन्स इफ 2 एंड 3 के रेंज में that element should come between left and right and afterwards. So the next condition will be, we knows the next condition, if that array is greater than the right, greater, if the arrays is greater, arrays element is greater than the right, then the condition will false and we will just add up to the next one, add up to the next one. मीन्स यहाँ पे हमने वही किया है कि जो आय है उसको एडप्ट किया है टू द वन, क्योंकि वो इटरेशन भी होना चाहिए. सो हमने j प्लस वन किया है ताकि वो इफ द पॉइंटर्स इज एट द टू देन दैट पॉइंटर्स विल गो टू द वन and afterward if the one also in the one also the condition is getting false, then it will go to the 4, and if the condition is getting false there also then it will go to the 3. ऐसे ही कुछ होगा guys. And this is the main condition guys कि the element should be present between both means should not be greater than the right element and should not be smaller than the left element. Also then we had used here count and okay, so thank you guys, and this was the explanation for this problem. So thanks.